Okay, good morning, student. We have already done our trigonometric exercise 8.1. Now, today our topic is exercise 8.2. As we have already discussed the examples of 8.2, and we know about some specific angles and their values. In our previous lecture, we have done these all things. How we can derive the values of some specific angles, for example 0 degree, 30 degree, 45, 60 degree and 90 degrees. These all things we have already discussed in our previous lecture. Now today's our topic is to find the values of, for example, sin 30 plus tan 45 degree minus cos 60 degree. Find these trigonometric equations. We can say equations, but these are not equations. We can say that any trigonometric function. It is a trigonometric function. We have to find the value of these trigonometric functions by using this table. Okay, our exercise 8.2. I have selected some questions for you from the exercise 8.2. Now, the first question is that evaluate the following. Evaluate the following. From these, there are 5 parts. From these 5 parts, I have selected one part. This is the sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosecant 60 degree upon secant 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. We have to find the value of this. We know solution. What is given is that we have to find the value of sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosecant 60 degree upon secant 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. We have to find or evaluate this. Now, we have already derived the value of sin 30 in our previous lecture. In this table, from this table, we know what is the value of sin 30. The value of sin 30 is 1 upon 2. So the value of sin 30 is 1 upon 2. Similarly, the value of tan 45 is 1 upon 1. And other angles are also we can find from this table. Okay. Now put these values in our given question. Sin 30. We know what is the value of sin 30. Sin 30 is 1 upon 2. So put here 1 upon 2 plus tan 45 is 1 and cosecant 60. What is the value of cosecant 60? It is the reciprocal of cosecant is the reciprocal of sin theta. Now, what is the value of sin theta? Sin 60. Sin 60 is under root 3 by 2. So the value of cosecant 60 is 2 upon under root 3. Similarly, we can put the value of cos 30, secant 30. What is the value of secant 30? Secant is the reciprocal of cos. The value of cos 30 is under root 3 over 2. So the value of cosecant secant 30 is 2 over under root 3 plus cos 60. What is the value of cos 60? Cos 60 is the value of cos 60 is 1 upon 2 and cot 45. Cot 45 is the reciprocal of tan 45. 1 upon 1 same 1 रह जाएगी. So now we calculate this. How we can calculate? 1 by 2 plus 1, 3 by 2 minus 2 upon under root 3 upon 2 upon under root 3 plus 3 by 2. This is the value of
tan 30 plus tan 45 means cosecant 60 upon secant 30 plus cos 60 plus cot 45. Now how we can simplify this? We have to more simplify this. How we can simplify? We can simplify this by rationalization. Rationalization कर देंगे से. After that, we can find the value of this. Rationalization कर दो से. ऊपर नीचे इसके साथ. नीचे वाले का 2 upon under root 3 minus 3 upon 3/2 ऊपर भी और नीचे भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. इसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई मींस इसको इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे. तो क्या बन जाएगा? 6 ये 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा. 3/√3 minus 2/3. फिर इसको इसके साथ करेंगे. नेक्स्ट आगे 3 9/4. फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस 6/2 √3 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा? ये a प्लस b a माइनस b. तो क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर. तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इन दोनों को अंडर रूट वालों को एक साथ ऐड कर लो और इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड कर लो. तो क्या हो जाएगा? ये जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे ये बन जाएगा 3 to 6 plus 6/2 √3 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 8 माइनस 8 माइनस 27 माइनस 8 माइनस 27 कितना हो जाएगा? माइनस 8 माइनस 27 35 ओवर 12 अपॉन ये पूरे का पूरा आ जाएगा. ये क्या बन जाएगा? 4/3 एंड माइनस 9/4. आगे से जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा? इस साइड 12 ओवर 2√3 माइनस 35 ओवर 12 अपॉन पूरे का पूरा ये आ जाएगा हमारा 4/3 माइनस 9/4. ओके. आफ्टर दैट इसे हम फिर से एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लेंगे और ये क्या बन जाएगा? पूरे का पूरा इसे कैंसिल कर देंगे. 6/√3 माइनस 35 ओवर 12 और इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसे ये हो जाएगा. सॉल्व करके क्या बनेगा हमारा? 16 माइनस 27 16 माइनस 27 एंड 12 ऊपर चला जाएगा. नीचे आ जाएगा 16 माइनस 27. आफ्टर दैट जब हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज very next question. The next question is that if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, a plus b lies between 0 and 90, a is greater than b, find the value of a and b. We have to find the a and b. We have given tan a plus b. Tan a plus b is equal to √3 and take
tan A minus B is equal to 1 upon under root 3. Theta क्या है? Theta is a acute angle because A plus B both lie between 0 to 90. Okay. Now we know tan theta is equal to under root 3. It implies that theta is equal to, what is the value of theta? When tan theta is under root 3, then when tan theta is under root 3, therefore the value of theta is 60 degree. We know the value of theta is 60 degree. It means to that theta is equal to 60 degree, and when tan theta is equal to 1 upon under root 3, it means to theta is equal to, what is the value of theta? From the table we know 1 upon under root 3, then the theta is 30 degree. Okay. It means to say that theta is a 30 degree. Now we have given tan A plus B is equal to under root 3 and tan A minus B is equal to 1 upon under root 3. So from these A plus B is equal to 60 degree and A minus B is equal to 30 degree. From these two equations we can easily find the value of A and B. Add these two. When हम दोनों इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इस साइड क्या बनेगा? ऐड किया 2A, B के साथ B कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 90. Then we can say find the value of A from here. A is a 90 over 2, cancel each other. We get the value of A. The value of A is a 45 degree. Now put the value of A in any one equation from these two equations. We can find the value of B also. Put A is equal to 45 degree in 1 or 2. Any one. किसी में भी put कर दो, वहाँ से value same आएगी. Put the value of tan A is equal to 45 degree in 1. From here 45 degree plus B is equal to 60 degree. Therefore from here we can find the value of B is 60 degree minus 45 degree. So it becomes, what is the value of 15? The value of B is 15 degree. Now from this we can find the value of A and B. We have find value A and B. A is greater than B. All the inequalities are satisfied. A plus B is less than equal to 90. We have B is a 15 degree and A is a 45 degree. The one inequality is that A plus B lies between 0 and 90. When we add these, it becomes 60. It is less than 90 or greater than 0. So this inequality is satisfied and one is more. A is greater than B. Here A is a 45 and B is a 15. Both the inequalities are satisfied. Okay. We have find the value of A plus B and A minus B. Now the next is exercise 8.3, in which we have to find the trigonometric ratios of complementary angles. What are complementary angles? Firstly, what are complementary angles? What are complementary angles? Complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. If A and B two are complementary angles, then A plus B must be 90 degree. Okay? The complementary angles are those angles whose sum is 90 degree. Okay? You know already. Now we have a right angle triangle ABC. ABC. Now we have to change the trigonometric ratios at 90 degree.
can change theta at 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. In coordinate geometry we have four quadrants. In coordinate geometry we have four quadrants. Here angle is 0 degree, here angle is 90 degree. On this line it becomes 180 and here it becomes 270 degree. Now we can change all the angles from 90, 180, 270 and 360. From here it becomes again 360 complete angle. In first quadrant all are positive. All trigonometric ratios are positive. In second quadrant, after school to college, we have a memory to learn how we can learn which angle in which quadrant is positive and which trigonometric ratio in which quadrant is negative. After school to college, A meaning all are positive, S meaning sin and its reverse is cosecant positive, T meaning tan and its reverse is cot positive, C meaning cos and its reverse is secant, both are positive. In first quadrant all are positive, second sin and cosecant is positive, in third quadrant tan and cot positive, and fourth quadrant cos and secant are positive, rest all are negative. Now we have learned only in first quadrant. In 10th class we have only first quadrant. We have not any second and third, fourth quadrant. Because in 10th class syllabus only first quadrant we have only complementary angles, trigonometric ratios of complementary angles. We are talking about only complementary angles. These are extra, I have told you there. Okay, how we can change at 90 degree? For example, if we have any trigonometric ratio given without any specific angle, we have in our table we find the only values of some specific angles: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. हम लोगों ने सिर्फ यही किया है, यही लर्न की है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने जब सिर्फ इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी है, सिर्फ इनकी, रेस्ट की हमें नहीं आती। हमें नहीं पता अगर इस 0 और 30 के बीच में कोई एंगल आ जाए उसकी वैल्यू क्या है, बिकॉज हमने टेबल में क्या है कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की एंड 90 की। अगर कोई और आ जाता है तो उसे हम कैसे निकालें? सपोज अगर आपके पास आ गया एनी मोर एंगल आ गया, सपोज आपके पास आ गया कौन सा सॉरी से निकाल लो, 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस x, जैसे कोई भी हमारा बन गए 45 बन गए, 30 बन गए, 70 हमारे पास आ गया। सपोज 60 की तो हमें पता है, निकाल लेंगे। और आ गया कोई सपोज 90 माइनस आपके पास आ गया 15 90 माइनस 15 हम ले लेते हैं 45 60 30 20 भी हो जाएगा। और इसे ले 90 माइनस 15 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। एक्सरसाइज में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है tan 65 अपॉन cot for 25 given है। cot 25 given है, tan 65 अपॉन cot 25 given है। हमें नहीं पता 65 की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता 25 की वैल्यू क्या है।
हम इसे एज कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 8.2 उसमें तो हमें स्पेसिफिक एंगल गिवन थे 0, 30 और 45, 60, 90 इनमें से कोई एंगल था, उसकी वैल्यू हमें लर्न थी टेबल में से हमने यूज करके उसको एवेल्यूएट कर दिया था। लेकिन इसे कैसे एवेल्यूएट करें, 65 की भी नहीं हमें पता और 25 की भी नहीं हमें पता, तो हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स लिख सकते हैं और इसे चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम चेंज करते हैं sin को 90 माइनस थीटा लिखते हैं, जब भी हम sin 90 माइनस थीटा वो बन जाता है cos थीटा, cos थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा करते हैं वो बन जाता है sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा करते हैं cot बन जाता है, cot करते हैं तो tan बन जाता है, secant 90 माइनस करते हैं तो cosecant बन जाता है, cosecant करते हैं तो secant बन जाता है। ये हमें लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे इस साइड में। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड tan 65 अपॉन cot 25। अगर हम इसे 90 माइनस समथिंग लिख लें, 90 माइनस 25 लिख लें, इसे हम लिख सकते हैं 65 को 90 माइनस 25 अपॉन cot 25। 90 minus 25 upon cot 25. Now we know that tan 90 minus theta becomes cot theta. So here theta is a 25 degree. It becomes cot 25 over cot 25 now the denominator both are same, they cancel each other, it becomes 1. Okay, similarly by using these complementary trigonometric ratios we can find the any angle that is given, that is a sum of we can write that it is a 90 minus something, then it becomes change its trigonometric ratios and we can find the value of that given. Okay, आज एक लेक्चर और भी है, उसमें हम लोग करेंगे इसको डिटेल से।